Okay. I think, hello, is my computer screen visible to all of you? Hello, 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 hello. Is my computer screen visible Yes, to all sir. of you? Okay. So I am asking you guys that earlier we have already performed two experiments. I want to know the name of the two experiments from which we control the speed of the induction motor. Can you tell me? Already we performed these two labs in this semester, our past labs, past laboratory classes. Can you guys tell me? So earlier we have already conducted the experiment where we can control the speed of induction three-phase induction motor. The name of the induction experiment is speed control of induction motor. First, speed control of induction motor by voltage control method, and second, the speed control of induction motor by frequency control method, and by VVVF method, variable voltage, variable frequency. Already we completed these two experiments where we control the speed of the induction motor by voltage, by changing the voltage, and by changing the frequency of the supply current. Okay, so today we will going to perform another experiment where we can control the speed of the induction motor. Okay, and the name of the particular experiment is, as you can see in the user interference of the IIT Roorkee virtual lab, that is speed control of slipring induction motor. Is my voice is audible to all of you? Please confirm. Hello. Is my voice is audible to all of you? Okay. Yes, sir. Okay. So listen to me very carefully. So today we will perform a experiment. With the help of this experiment, we can control the speed of the slipring induction motor. Okay. So what is our aim? First, we would like to going to first discuss the theory portion of this particular experiment. We will briefly discuss about the theory portion, and after that we will going to the perform this lab on the simulator in the IIT Roorkee virtual lab user interference. Okay. So first, speed control of slipring induction motor. So what is the aim of this experiment? ये experiment हम लोग क्यों करना चाहते हैं? ठीक है? To perform the speed control of test slipring induction motor by rotor resistance control method. Plot the motor speed characteristic in different value of applied resistance in slipring induction motor. So रोटर का हम लोग रोटर का रेजिस्टेंस कंट्रोल करके रोटर का we control the rotor resistance by which we can control the speed of the induction motor by controlling the rotor resistance. By controlling the rotor resistance, we can control the speed of the induction motor. So in the theory part, if we go to the theory part, first I would like to elaborate one thing. There are some difference in between some differences have between the spherical induction motor and slipring induction motor. Can anyone tell me what is the major difference of the major physical difference of the normal induction or spherical induction motor and slipring induction motor? What is the difference between spherical induction motor and slipring induction motor? Can you guys tell me? It is very important to understand this experiment. Hello. Can anyone tell me what is the difference between? I am asking that can anyone tell me what is the difference between normal 12-phase induction motor and slipring induction motor? Can anyone?
then please confirm, please say no. It is okay. If you guys don't know, I will explain all the things. सर स्क्वायरल केज में हम लोग को आउटपुट के अक्रॉस मैकेनिकल डोमेन मिलता है और स्लिप रिंग के आउटपुट के अक्रॉस मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल डोमेन मिलता है. और थोड़ा एलिवेट करके बोलो. Okay, I will explain this. What is the difference between the squirrel cage induction motor? What is the difference between squirrel cage induction motor and the slip induction motor? Pranav is now joining. So I would like to first ask to Pranav. Pranav, are you there? Hello. Pranav, are you there or not? Yes, sir. Okay, Pranav. Okay, Pranav, tell me. Pranav, tell me what is the difference between squirrel cage induction motor? What is the physical difference of the squirrel cage induction motor and slip ring induction motor? Can you tell me what is the major difference? सर ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में सर रोटर वाइंडिंग शॉर्ट किया जाता है सर, और जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं किया जाता. और क्या? और शाफ्ट में क्या चेंजेस होता है? आई एम आस्किंग इन द शाफ्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन द शाफ्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर? सॉरी सर, मालूम नहीं. Okay, no problem. I will explain. Okay, so listen to me very carefully. Okay. So first, I would like to what is the difference? Okay. So what is the slip ring? As you see in the picture, you can see the picture of the slip ring induction motor. So slip ring induction motor is a phase wound motor of induction motor. Okay, and ये जो पिक्चर में तुम लोग देख पा रहे हो, ये जो 3 स्लिप रिंग है, ये रोटर के शाफ्ट में अटैच रहता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में. You can clearly see in the slip ring induction motor 3 rings are connected in the shaft of the induction motor. Okay, and also there is the brass is there. Okay, and also the brass is there. Okay, 3 slip rings are connected into the shaft of the induction motor, and also it is connected in the series of the rotor circuit. In the series of the rotor circuit, we have connected these three slip rings. This is connected in the series. Okay, and also we connect a external resistance. You can see the bottom part of the 3 slip rings. 3 external resistance are also connected with the 3 slip rings. Okay, and what is the significance? We will discuss. Okay, so first we will discuss. So today our experiment name is speed control of slip ring induction motor. So first we would like to see what is the written in the theory portion, and I would like to read the theory. After that, we will discuss about the topic. First, listen to me very carefully. A wound rotor induction motor, slip ring induction motor, stator like a squirrel cage induction motor. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का मशीन का 2 पार्ट होता है, एक होता है रोटर, एक होता है स्टेटर. तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में दोनों में जो रोटर स्टेटर पार्ट होता है, दोनों में सेम होता है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्टेटर ऑफ द बोथ ऑफ द इंडक्शन मोटर. ओके, स्लिप रिंग आइदर और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो दोनों का रोटर स्टेटर सेम होता है. But a rotor with a insulated winding brought out via the slip rings and brushes. मगर मेन डिफरेंस क्या होता है दोनों में? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में इंसुलेटेड वाइंडिंग बॉट आउट वाया द स्लिप रिंग. इंसुलेटेड वाइंडिंग बॉट आउट, ये जो वाइंडिंग जा रहा है, दिस इज द इंसुलेटेड वाइंडिंग बॉट आउट वाया द स्लिप रिंग एंड ब्रशेस. ये जो शाफ्ट होता है स्लिप इंडक्शन मोटर में, उसके शाफ्ट में 3 रिंग हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं. ठीक है. However, no power is applied to the slip ring. The sole purpose is to allow the resistance
to be placed in this series with the rotor winding while starting. So basically इसका काम क्या है? इस slip ring का काम power supply we cannot apply power in this slip ring, but we just this purpose of the slip ring is to provide the resistance. The only purpose of this slip ring is to provide the resistance, and this slip ring is in the series. ये सीरीज रोटर के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है सर। क्यों? तुम लोग पिक्चर में देख सकते हो ये जो रोटर का वाई टर्मिनल है इसको देखो सीरीज में इसके साथ एक स्लिप रिंग कनेक्टेड है और स्लिप रिंग के साथ एक सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। और भी देखो ये जो बी फेज है रोटर का जो बी फेज है दिस आई एम इंडिकेटिंग इन द पिक्चर। ये बी फेज के साथ देखो ये बी फेज सीधा जा रहा है और स्लिप रिंग का जो बी इंडिकेटिंग स्लिप रिंग है इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। नॉट ओनली कनेक्टेड द रोटर फेस बी फेस विद द बी स्लिप रिंग बट आल्सो ए रेजिस्टेंस इज आल्सो कनेक्टेड इन द सीरीज। ओके, इसको हमेशा याद रखना। स्लिप रिंग द पर्पस ऑफ स्लिप रिंग इज टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस। ओके, एंड इट इज प्लेस्ड with the series of the rotor phases. Okay, I think till now there is no doubt. Okay, now come to slip ring characteristics. First we will read this portion and after that we will discuss. Okay, when we will complete the theory portion then we can go with the simulator part to perform this experiment. तुम लोग इसको अच्छी तरह से मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आस्क करूंगा सबसे। तो नाउ कम टू द पार्ट ऑफ द स्लिप रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो स्लिप रिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ द स्लिप इंडक्शन मोटर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, सो स्लिप रिंग मोटर इज अ फेज बाउंड मोटर इज एन इंडक्शन मोटर व्हिच कैन बी स्टार्टेड विद फुल लाइन वोल्टेज। तो स्लीपिंग इंडक्शन मोटर इट स्टार्टेड विद द फुल लाइन वोल्टेज। फुल लाइन वोल्टेज के साथ ये हमेशा याद रखना स्लीपिंग इंडक्शन मोटर व्हिच कैन बी स्टार्टेड, इसको हम लोग फुल लाइन वोल्टेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। फुल लाइन वोल्टेज मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कोई भी थ्री फेज अगर मोटर हुआ तो उसका सप्लाई वोल्टेज हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं? 420 वोल्ट। अगर सिंगल फेज हुआ तो 220 वोल्ट इन जनरल। ओके, तो अगर हम फुल लाइन वोल्टेज अप्लाई करेंगे ये जो थ्री फेज है तुम लोग देख पा रहे हो इन द पिक्चर इट इज इंडिकेटिंग दिस इज द थ्री फेज, दिस इज द थ्री फेज स्लीपिंग इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अगर इधर में बोला गया है इट कैन बी स्टार्टेड विद द फुल लाइन वोल्टेज दैट मींस द फुल लाइन वोल्टेज इज मींस 420 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट्स स्टेटर टर्मिनल। ओके, तो स्टेटर टर्मिनल हम लोग जो इंडक्शन मोटर में अच्छा तुम लोग बताओ इंडक्शन मोटर में हम लोग कितना सप्लाई देते हैं? मैंने इट इज सिंगल फेड सप्लाई फेज हम लोग कितना सप्लाई फेच करते हैं इसमें? हम लोग सिर्फ एक ही सप्लाई फेच करते हैं। कहाँ पर? स्टेटर में फेच करते हैं, क्योंकि स्टेटर में जब लोग हम लोग इसको फेच करते हैं क्योंकि तो इंड्यूस होता है करंट, इसको रोटर में हम लोग अलग से कोई करंट प्रोवाइड नहीं करते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर। So it is also very important question why induction motor is called induction motor, because we cannot supply like other machine DC machine or synchronous machine in the rotor of the machine. I did not supply any power to the rotor of the machine. It is just induced according to the Lorentz law and electromagnetic induction. Okay. So now come to the point, the rotor winding terminal of the wound rotor are connected with the rotor winding. The rotor winding मतलब ये देखो ये जो रोटर का वाइंडिंग RYB, ये जो रोटर का वाइंडिंग है that is the rotor winding. तो सर रोटर वाइंडिंग टर्मिनल of the wound rotor motor connected in the three slips mounted on but insulated from the shaft. ये जो रोटर वाइंडिंग है जैसे मैं अर्लियर बोला था ये रोटर वाइंडिंग जो स्लिप रिंग है इसके साथ माउंटेड है, मगर ये जो माउंटेड किया गया है ये इंसुलेटेड है फ्रॉम द शाफ्ट। ओके, द स्लिप रिंग is connected with the rotor winding but it is insulated from the shaft. Listen to me every point very carefully. Later after the experiment we will ask some question so that our conceptual part
is clear. At the time of the start, at the time of the start, the value of the starting current is adjusted by the adding of the external resistance to the rotor circuit. अच्छा तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, हम लोग जब मोटर रन करते हैं तो स्टेटर हम लोग एक चीज यूज करते हैं, उसका नाम है, हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, डीसी मशीन के जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर यूज करते हैं। हम लोग स्टार्टर को क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी आर यूजिंग स्टार्टर टू स्टार्टिंग ऑफ द एनी मोटर? कोई बता सकते हैं स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर या 3 पॉइंट स्टार्टर? कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी आर यूजिंग स्टार्टर? स्टार्टिंग, प्लीज टेल मी। से स्टार्टिंग करंट एक्चुअली बहुत हाई होता है तो उसको कम करने के लिए। Exactly, very good. Starting to control the starting current, because अगर स्टार्टिंग करंट ज्यादा हो गया तो स्टार्टिंग करंट क्या करेगा, जो मोटर का जो रोटर पार्ट है, जो मोटर का जो वाइंडिंग है उसको डैमेज कर देगा। तो इधर पे क्या होता है, इधर पे देखो क्या बोला गया है, listen to me very carefully. At the time of the start, the value of the starting current is adjusted by the adding of the external resistance to the rotor circuit. तो ये रोटर सर्किट में हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम करंट अगर फ्लो होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम करंट इज फ्लो इनटू द मोटर, देन इट इज probable condition that motor winding get burned. So we did not want this hazard. For this safety precaution, we connect this external resistance. We connect this external resistance with the sliprings so that we can control the starting current. यही चीज देखो इधर पर बोला गया है, at the third line, at the time of the start, the value of the starting current is adjusted by adding up the external resistance to its rotor circuit. मतलब अब हम लोग एक जो रेजिस्टेंस ऐड किए हैं, रियोस्टेट ऐड किए हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, रियोस्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, आगे पीछे करके रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कम या ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, जो करंट है स्टार्टिंग, जो इनिशियल करंट है जो मोटर को स्टार्टिंग करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट द मोटर वाइंडिंग कांट बर्न। ओके, नेक्स्ट, as the rotor speeds up, the external resistance is decreased in steps so that the motor torque tends to remain maximum during the acceleration period. तो मोटर जब स्पीड अप करता है, मोटर जब स्पीड अप करता है मतलब मोटर, तुम लोग आरपीएम टैकोमीटर में देखे हो, टैकोमीटर डिजिटल टैकोमीटर में उसका स्पीड ज्यादा होता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो मोटर का हम लोग क्या चाहिए, मोटर का हम लोग डिजायरेबल स्पीड चाहिए। वी वांट द मोटर इज रन विद द डिजायरेबल स्पीड। मान लो कोई भी मोटर है, उसके साथ हम लोग एक कोई भी इंडस्ट्रियल मोटर है, उसके साथ हम लोग मान लो कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या है, कन्वेयर विद द हेल्प, जो थर्मल पावर प्लांट होता है उधर पर कन्वेयर बेल्ट रहता है। मान लो एक जगह कोयला रखा हुआ है, जो डस्ट किया हुआ कोयला, तो डस्ट किया हुआ कोयले को हम लोग जो बॉयलर है उसके पास लेके जाएंगे, तो इधर तो ये मैन पावर से नहीं होता है, ये होता है कन्वेयर बेल्ट। तो एक मोटर के ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है, जब कन्वेयर मोटर घूमता है, कन्वेयर बेल्ट कैन डिलीवर पर्टिकुलर आइटम टू पॉइंट ए टू बी। ओके, सो दैट मान लो कोयला रखा हुआ है कहीं पर, कोयला स्टोरेज में, जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज होता है, उधर से जहाँ पर बॉयलर है, पावर प्लांट है, उधर पे मान लो डिस्टेंस से 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर जाने को एक मोटर लगा रहता है, उसके साथ एक कन्वेयर बेल्ट रहता है। जब कन्वेयर मोटर रोटेट करता है तो कन्वेयर बेल्ट भी रोटेट करता है, सो वी कैन इजीली मूव ए पार्टिकल वन पॉइंट टू बी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर बेल्ट। सो मान लो हम लोग जल्दी पहुंचाना चाहते हैं, उसका स्पीड को कंट्रोल करते हैं, हम लोग 1500 आरपीएम में मोटर को घुमाना चाहते हैं, तो 1500 आरपीएम में अगर हम लोग घुमाना चाहते हैं तो मान लो उधर पर एक स्लिप रिंग लगा हुआ है कन्वेयर बेल्ट के साथ, तो ये जो रेजिस्टेंस, ये जो स्लिप रिंग के साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका काम क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो ये रेजिस्टेंस जब मोटर घूमने लगेगा, स्टार्टिंग में तो ये कंट्रोल, मैं रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पोजीशन में रखूंगा, सो दैट द करंट कांट
current is we can control the current. बट जब मोटर घूमने लगेगा, मेरा स्पीड चाहिए 1500 आरपीएम कन्वेयर बेल्ट को जल्दी घुमाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो रेजिस्टेंस है उसको एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट द वैल्यू ऑफ द स्टार्टिंग करंट एडजस्टेड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बट एज द रोटर स्पीड अप, जब मोटर घूमने लगेगा, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज स्टेप बाय स्टेप सो दैट द मोटर टॉर्क इज रिमेन मैक्सिमम। ओके, तो मोटर का टॉर्क इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को जो रेजिस्टेंस है उसको वैल्यू डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, मगर जब मोटर रनिंग कंडीशन में हो जाएगा, जब हम लोग को एक डिजायरेबल स्पीड चाहिए, तब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे। एंड फाइनली अंडर द नॉर्मल ऑपरेशन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज फुल्ली कट ऑफ। जब मोटर नॉर्मल कंडीशन में रन करने लगेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कट कर देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है। तब मैंने पहले ही डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू तब तक है जब तक स्पीड हम लोग स्टार्टिंग तक, उसके बाद हम लोग इसको डिक्रीज करते जाएंगे। ओके ओके, fully cut over. The slip ring are short circuited so that the motor now develop full load torque and now low value of the slip ring. The point to be noted is slip ring slip necessary to generate the maximum torque is directly proportional to the rotor resistance. As I am already discussed you guys that here also in the theory portion also said that the slip necessary to generate the maximum torque is directly proportional to the rotor resistance. So it is evident that slip is increased with the external resistance. With the above statement, they discuss different methods of the speed control. So that is basically the purpose of the slip ring. So slip ring का purpose हम लोग briefly we clear the idea of the slip ring. Why slip ring are used in the induction motor? Okay, what is the sole purpose of this slip ring? Okay, तो slip ring का use करके हम लोग there are two different methods we can control the speed. One is rotor resistance control and second is cascade control. Here we sorry, here we perform the experiment based on the speed control by the rotor resistance control. Okay, rotor का resistance हम लोग control करेंगे. The external resistance, external rheostat which is used for the starting purpose of the slip ring motors. The external resistance मतलब ये जो resistance है, पिक्चर में तुम लोग देख पा रहे हो, which we call the external resistance, which is in the series connected with the slip rings used for the starting purpose. इस starting purpose के लिए slip use होता है. And this slip ring motor can be used for its speed control too. ये जो starting purpose में हम लोग ये resistance को add करके use करते हैं, माने इसका sole purpose is similar like to minimize the current like starter. बट ये जो रेजिस्टेंस है स्टार्टर से डीसी मशीन को स्टार्ट करने के टाइम में हम लोग जो स्टार्टर यूज करते हैं, ओके टाइम इज रनिंग आउट, इफ द मीटिंग इज एंड ऑटोमेटिकली प्लीज जॉइन अगेन यूजिंग द सेम लिंक. ओके ओके, सो आई एम डिस्कसिंग ये जो तीन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट हम लोग किए हैं. ओके, दिस थ्री एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसका पर्पस सिर्फ स्टार्टिंग में है. हम लोग ने बोला था करंट को मिनिमाइज करने के लिए स्टार्टिंग करंट को, so that the winding of the motor can't burn. And also this external resistance, ये resistance को हम लोग यूज करेंगे to control the speed of the motor. इसको हम लोग दो पर्पस से इस एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, for the starting purpose and also the control the speed of the this slipring induction motor, three-phase slipring induction motor. So now come to the theory part. But the point to look into the starting rheostat must rated for continuous operation. With the same rheostat added to the rotor circuit, it is possible to regulate the slipring motor. The resistance is engaged maximum during the starting and slowly cut off the increase the speed of the motor when running at full speed. जब मोटर फुल स्पीड में रहेगा तब हम लोग जो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए थे ये कट ऑफ कर देंगे. ठीक है, तो स्टार्टिंग टू फुल लोड, ये मोटर का अगर क्वेश्चन ऐसे किया गया स्टार्टिंग टू फुल लोड
थ्री फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टू फुल लोड में ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, इसका इसका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है? इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम लोग उस रेजिस्टर को कम करते जाएंगे, वैल्यू को कम करते जाएंगे। If the need of the arise to reduce the speed, listen to me very carefully. The resistance is slowly added up, thus the speed reduced. Listen to this point very carefully. मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग से स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग से जब मोटर फुल फुल स्पीड पे जाएगा, मान लो 1500 आरपीएम फुल स्पीड है, मतलब 0 से 1500 आरपीएम तक ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है 0 टू दिस रेजिस्टेंस, जब मोटर का स्पीड 0 टू 1500 आरपीएम में वेरी करेंगे, हम लोग लेके जाएंगे, तब ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग साइमल्टेनियस से डिक्रीज करते जाएंगे। क्योंकि इसको अगर डिक्रीज करेंगे तो ज्यादा पावर का फ्लो होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग एंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग इन द फुल लोड कंडीशन। मगर अगर मान लो अभी फुल लोड कंडीशन में चला गया, मैं रेजिस्टेंस को कट ऑफ कर दिया, ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस में कट ऑफ कर दिया फ्रॉम द सर्किट। मगर मान लो अभी मुझे मोटर का स्पीड को एडजस्ट करना है, मान लो 1500 आरपीएम में घूम रहा है, प्रणव ने मुझे बोला कि सर अभी कन्वेयर बेल्ट से बहुत कोयला चला गया है, आप थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, ये जो रोटर के साथ ऐड है, इसको ऐड करते जाऊंगा, इसको मैंने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाऊंगा। अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस को अगर इंक्रीज करूंगा तो जो स्पीड है, मोटर का जो स्पीड है ये कम होता जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ऐड होता जाएगा रोटर के साथ, इस रोटर के साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो क्या होगा, स्पीड कम होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लो रेजिस्टेंस को 100 ओम इंक्रीज कर दिया, तो मुझे प्रणव उधर से वॉकी टॉकी में कॉल करके बोलेगा सर स्पीड से 1500 आरपीएम से 1200 आरपीएम हो गया, अभी स्पीड घट गया है, इट इज ओके। मैं बोलूंगा ठीक है, ओके। एंड द इक्वेशन इज द टॉर्क, ये टॉर्क का इक्वेशन है। टॉर्क का इक्वेशन क्या है, T इक्वल टू एच बाई आर। एच इज द स्लिप एंड आर इज द रोटर रेजिस्टेंस। So T equal to H by R. T is the torque of the motor, H is the slip, and R is the resistance of the rotor. Okay. If I increase the resistance, you can also elaborate the whole thing from this equation. If I increase the resistance, then also the torque means speed. If I increase the R, then the speed of the motor is decreasing. This is the inversely proportional relation. And if I decrease the R, then the torque is increasing. Okay. So it is evident from the above relation that the rotor resistance increase, the torque decrease. रोटर रेजिस्टेंस R को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टॉर्क तो डिक्रीज होगा। But a given load demand, the motor and thus the rotor has supplied the same torque without any decrease. So in the order to maintain the torque constant as the rotor resistance increase, slip also increase. मतलब ये तो T and R, they are inversely proportional, but the T and H, they are equally proportional. अगर मैं T को इंक्रीज करूंगा तो स्लीप भी इंक्रीज करेगा, यही बात बोला गया है। The increase of the sleep is nothing but the decay in the motor speed. Okay. Now we are going to discuss the last part, and that is the disadvantage. What is the disadvantage of this particular experiment? That is the speed control of sleeping induction motor. What is the disadvantage? After the disadvantage part, we will go into simulator part. In between, if the meeting is end automatically, then please join again using the same way. Okay. Okay. But there are some disadvantages in this method of speed control as the rotor resistance increase. As the rotor resistance increase, R loss is also increase. रोटर का अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो लॉसेस आल्सो इंक्रीज होगा, व्हिच इज टर्न डिक्रीज द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो हम लोग अगर रोटर को रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो आर लॉसेस इज आल्सो इंक्रीज, एंड ये टोटल एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है। यही इसका मेन डिसएडवांटेजेस है।
and it can be interpreted as the loss is directly proportional to the reduction of the speed. Since the losses are more, this method speed reduction is only for the short period only. क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस में इंक्रीज करेंगे तो लॉस क्या होगा? लॉस इज आल्सो इंक्रीजिंग, and when the loss is increasing, then efficiency is obviously, if the loss is increasing, then in any motor the efficiency is decreasing, and it can be interpreted as the loss is directly proportional to the reduction of the speed. हम लोग स्पीड को जितना कम करेंगे with the help of external resistance, the loss is also increasing simultaneously, and when the loss is increasing, the efficiency of the motor is increasing. If the efficiency is decreasing, there is no there is there is very small very small chance that we will use this operation in the short period of time. जहाँ पर एक शॉर्ट पीरियड के लिए मोटर का स्पीड को कंट्रोल किया जाना चाहिए और हम लोग करना चाहते हैं, उधर पर हम लोग इसका यूज करेंगे. अदरवाइज देयर आर साइमल्टेनियसली और भी मेथड है, जैसे we can control the speed by speed of the induction motor by voltage control that we are already performing in our lab. We can control the speed of the induction motor by controlling the supply voltage, that is VVA method. Also we can control the speed of the motor by pole changing method, that is 4 pole and 6 pole. So that is the theory part. Is there any confusion? Is there any query about the theory part? If you do not have any query, we will go into direct simulation part. Okay. Okay. Now, if we do not have any queries, so we are going to simulation part. So that is the simulation user interference simulation window of this particular lab, which is provided by the IIT Roorkee virtual lab. in the first, I will describe all the meter and all the equipment in our simulation panel. So in our simulation panel, you can clearly see 1 voltmeter, 1 ammeter, and 1 wattmeter is there. Why voltmeter is there? Because we need to know the supply voltage. For measuring the supply voltage, we using this voltmeter. Why ammeter is there? We want to measure the current. Okay, we want to measure the current. This current we want to measure this current. We can use this ammeter. And also there is a wattmeter is there. The time is ending. Please join the mute meeting using the same link.